अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ हिना शौकत एंड आई एम योर क्लास 9th केमिस्ट्री टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 7.2। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सो फार वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ टॉपिक 7.1 विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। हमने डिस्कस किए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ। Then we started our topic 7.2 which was oxidation state and rules for assigning oxidation. And in our previous lecture we did some examples from the book related to this topic as well. And in today's lecture we have to do test yourself number 7.2 questions, and these questions are related to oxidation state and rules for assigning oxidation state. So let's start with the first question, which is find out the oxidation numbers of the following elements marked in bold in the formula. As you can see that there are 4 formulas given, and in all these formulas only one letter is bold. When I say one letter, so it means that one symbol is bold. And for that bold symbol, you have to find its oxidation number. लेकिन उसके लिए आपको बोल्ड वाले एलिमेंट के अलावा बाकी सबकी ऑक्सीडेशन नंबर्स पता होने चाहिए। और हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर्स और वैलेंसी टू सम एक्सटेंट सिमिलर होती है। सो अगर आपको चैप्टर नंबर 3 से वैलेंसीज याद हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने वैलेंसी का टेबल किया था, अगर आपको वो याद है और आपको पता है कि कौन सी चीज़ पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है और उसकी पॉसिबली क्या वैलेंसी हो सकती है, तो फिर आप उसकी ऑक्सीडेशन नंबर का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं इन सारे के सारे फॉर्मूलाज में मिसिंग एलिमेंट को। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रूल याद करा दूं फॉर ऑक्सीडेशन, एंड दैट रूल वाज कि इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स algebraic sum of oxidation numbers for all the elements is 0। यानी कि चूंकि ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं, so we know that algebraic sum of oxidation numbers of all elements, it is going to be equal to 0। अब इस चीज को हम अपने माइंड में रखेंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व की थी, ये समवट उन्हीं एग्जाम्पल्स की तरह के क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच इज बेरियम फॉस्फेट। आई हैव मेंशन्ड P with a different color, so it means that we have to find oxidation number for P. So let's start writing. As we know that B is a symbol for barium and 3 indicates that there are 3 atoms of barium. So you will write 3 and then you have to put a square bracket, and in this bracket you will write oxidation number of barium. Now we know that this is algebraic sum, so यानी कि अब आएगा प्लस का साइन। This 2 outside of this bracket shows that the 2 is with phosphorus as well and with oxygen as well. So we can write that 2 and then bracket will indicate oxidation number of phosphorus. Then since we know that now there are 8 atoms of oxygen, 4 2s are 8, so you will write 8 and then same in square bracket oxidation number of oxygen. And since here all the elements are done, we have written the sum of all the elements present in this formula, so you can write is equal to 0 as per our rule. Now we just have to fill in the oxidation numbers for the various elements. For barium, the oxidation number is +2. Remember, in oxidation numbers, we always write number after the sign. Now for phosphorus, you have to find, so you can write 2p, simple. And for oxygen, हम जानते हैं कि oxidation number है -2. There are few exceptions like peroxide and like OF2, मगर मेजॉरिटी केसेस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होता है, इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट +6 + 2p -16
it means it is going to be 2p minus 10 is equal to 0. I hope you know maths calculations better than me, so you can easily solve it. So p is going to be 10 divided by 2, which is equal to plus 5. Remember, when you will find oxidation number, you have to mention the sign as well. Sign is the most important thing. You cannot skip the sign. So let's move to the next part in which we have to find oxidation number for sulfur in the formula of calcium sulfate. If we look at the first element, so the first element is calcium. And we can write it oxidation number of calcium. Since there is nothing written in subscript, it means that there is only one atom. So, oxidation number of calcium plus oxidation number of sulfur we have to find. And then we will add 4 into oxidation number of oxygen. And we will put it equal to 0. Now, oxidation number for calcium is plus 2. For sulfur, we have to find, so I'll just write S. And for oxygen, we know that it is minus 2. Would be equal to 0. Now, if you will solve it, then you will get 2 plus S minus 8 is equal to 0. And S minus 6 is equal to 0. So S would be equal to 0 plus 6, which is plus 6. So oxidation number for sulfur is plus 6. Let's move to the next formula. This is the formula for copper nitrate. And in copper nitrate, we have to find the oxidation number for nitrogen. So simply, we will start writing with oxidation number of copper. Now, after plus sign, we know that this bracket, and this bracket means that the 2 belongs to nitrogen and oxygen both. So there will be 2 atoms of nitrogen. So we will write 2 and oxidation number of nitrogen. Plus, there would be 6 number of oxygen atoms. So 6, and in square bracket, you will write oxidation number of oxygen. And it is going to be equal to 0. Now, oxidation number for copper is plus 2. Oxidation number for nitrogen we have to find. So we can write 2N. And oxidation number of oxygen is minus 2. So, plus 2 plus 2N minus 12. So, 2N would be equal to plus 10, and N would be equal to plus 5. So, we can say oxidation number in this formula is plus 5. Let's move to the last formula here. Now, in aluminium sulfate formula, we have to find out the oxidation number for sulfur. Method is going to remain the same. There are 2 atoms for aluminium. So 2, and in bracket you will write oxidation number of aluminium. Then you will have a plus sign. Sulfur के साथ 3 है. So 3 and oxidation number of sulfur. Plus there are 12 atoms of oxygen over here. So 12 into oxidation number of oxygen. And sum of the algebraic sum is equal to 0. Now, for oxidation number of aluminium, we have the value plus 3. For sulfur, we have to find, so we can write 3S only. And for oxygen, we know the value is minus 2. So it is going to be plus 6 plus 3S minus 24 is equal to 0. हमें find करना है S.
So 3s minus 18 would be equal to 0. And if we have to find s would be equal to plus 18 divided by 3, which is equal to plus 6. So plus 6 is the oxidation number of sulfur in aluminium sulfate. Now let's move to the next question of this test yourself. In a compound MX3, find out the oxidation number of M and X. अब यहाँ हमारे पास एक compound given है और formula is MX3. Now, if we consider that oxidation number of M is +3. So, हम जानते हैं कि अगर M का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो इन दोनों का जो सम है वो होगा 0, which means oxidation number of M plus oxidation number of N would be equal to 0. और हम जानते हैं कि यहाँ पे and oxidation number for X is equal to 0. और हम जानते हैं कि यहाँ X के साथ 3 है, so it means here you're going to place 3. So if we are saying that oxidation number for M is +3, so simply put the value +3 over here. Here you can write +3x is equal to 0. So 3x would be equal to 0 minus 3. So x would be equal to -3 divided by 3, which is -1. So oxidation number for x would be -1. Next question is, why the oxidation number of oxygen in OF2 is +2? When we were discussing the rules for assigning oxidation number, तो वहाँ हमने देखा था कि ऑक्सीजन का most of the time ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, लेकिन there are some exception, और उसमें एक exception थी OF2 की, जिसमें ऑक्सीजन का -2 होने के बजाय था +2 ऑक्सीडेशन नंबर. Since we know that ऑक्सीजन और फ्लोरीन में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. तो अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, सो उसका ये मतलब हुआ कि क्लोरीन की पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. सो अगर फ्लोरीन गेन करने की ज्यादा कैपेसिटी रखता है तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज ही आएगा. सो यू कैन से दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 is +2 because fluorine is more electronegative as compared to oxygen, and therefore fluorine will carry negative charge and oxygen will carry positive charge. Now, in next question, we again have to find oxidation numbers. So let's see the statement of next question. In H2S, SO2 and H2SO4, the sulfur atom has different oxidation number. Find out the oxidation number of sulfur in each compound. अब सारे के सारे compounds में से हमें sulfur का oxidation number बताना है. So let's start with the first one, which is H2S. So H2S में there are only 2 elements. इसका मतलब होगा 2 into oxidation number of hydrogen plus oxidation number of सल्फर. चूंकि हम जानते हैं कि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ये होगा इक्वल 0 के. अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हमें फाइंड करना है. सो सल्फर के लिए आएगा S would be equal to -2. So this is the oxidation number for sulfur. अब चलते हैं अगले पार्ट में, which is SO2. Now in SO2 सल्फर का हमने फाइंड करना है. So write oxidation number of sulfur. Now plus there are 2 atoms of oxygen, so 2 and in the brackets you will write oxidation number of oxygen, which would be equal to 0. Now
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फाइंड करना है, वी विल राइट S ओनली, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन होता है -2. सो S -4 is equal to 0. So S would be equal to +4. So this is the oxidation number of sulfur in sulfur dioxide. Let's move on to the third one, which is sulfuric acid. It's king of all acids. It's very important acid. In sulfuric acid, 2 hydrogen atoms, so 2 oxidation number of hydrogen. For sulfur we have to find, so just write oxidation number of sulfur. There are 4 atoms of oxygen, so 4 multiplied by oxidation number of oxygen, and then all of them are equal to 0. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, एंड सल्फर के लिए हमें फाइंड करना है, एंड फॉर ऑक्सीजन वी नो इट वुड बी -2. सिंपल मैथ्स के रूल्स को अप्लाई करेंगे, +2 + S -8 would be equal to 0, and S -6 equal to 0. So S is equal to +6. So this is the oxidation number of sulfur in H2SO4. As you can see that these were 3 different compounds, and in these 3 different compounds you are having different oxidation number for sulfur. Let's move to the next question. An element X has oxidation state 0. What will be its oxidation state when it gains 3 electrons? So पहले oxidation state 0 थी, जब वो 3 electrons gain करेगा, so what is going to happen? Oxidation state would decrease, क्योंकि gain of electron होता है reduction, so उससे oxidation state decrease हो जाएगी. So अगर हम इसे एक equation form में represent करें, so we can represent it like this, that first it was having 0 oxidation state, then if it will gain 3 electrons, so what will happen? It will be turned into -3 ion. Next question is, an element in oxidation state +7 gains electrons to be reduced to oxidation state +2. How many electrons did it accept? तो पहले उस पे चार्ज था +7, यानी कि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी. अगर हम उसके एटॉमिक नंबर से कंपेयर करें तो एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स कम है. और अब आफ्टर रिडक्शन क्या हुआ, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है +2. +2 का मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है. तो दिस इज सो अंडरस्टूड दैट व्हेन एन एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट +7 इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होगा, इट हैज एक्सेप्टेड 5 electrons, and you can mention it in the equation form as well, that previously its oxidation state was X +7. Suppose that element is X, and if it will gain 5 electrons, then its oxidation state would be reduced. So 7 में से जब हम 5 माइनस करेंगे, so answer would be +2. Next question is, if the oxidation state of an element changes from +5 to -3, has it been reduced or oxidized? And how many electrons are involved in this process? As you can see, कि +5 से -3 का मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हुआ है. एंड इफ देयर इज डिक्रीज, इसका मतलब है कि हो रहा है रिडक्शन का प्रोसेस. सो एक पार्ट तो क्लियर है कि इट इज बीन रिड्यूस्ड. सो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया. नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड? सो दिस इज अंडरस्टूड कि 5 से 0 पे जाने के लिए +5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, और फिर 0 से -3 पे जाने के लिए +3 electrons are required. So total number of electrons required are 8 electrons. और अगर हम इसे represent करें, so we can represent it, suppose that element is X, और X की oxidation state थी +5 की. So if it will gain 8 electrons, फिर जाके उसकी oxidation state होगी -3. So I hope if there will be any question related to
calculation of oxidation number, or just to find out that how many electrons are gained or they are lost by a particular element, तो आप उसका easily आंसर कर सकेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हमने इन क्वेश्चंस की मदद से ये सीखा है कि कैसे किसी फॉर्मूले में अगर हमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मालूम तो उसको कैसे मालूम करना है. मुझे उम्मीद है कि अगर इन फॉर्मूलाज में से कोई क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता कोई फॉर्मूला आपको आएगा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको उसे सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी. सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.